Hello students, welcome to Practically. We bring learning alive. Today we're gonna see the chemistry sample paper for term 2. As you all know, the term 2 exam is going to come in a period of month. Okay, so for that we have brought exclusively a sample paper discussion wherein we're gonna discuss the physics sample paper, chemistry sample paper, biology sample paper, and maths sample paper. Okay, so since my name is Mayur, I'm a chemistry teacher, I'm going to cover the chemistry sample paper. Okay, as you know, there are different types of chapter and there's a different weightage for a different chapter, right? Yeah, that is absolutely right. But so I have curated and put a very good question for you to prepare for that exam of yours. Okay, so on that note, let's begin. So sample paper 1, as you can see. So section A, you know that there are three sections here, right? Section A, section B, and section C. Section A will be having three questions, right? Each question will be having 2 marks. Then you have a section B. In section B, you will be having a questions from question number 4 to question number 11, right? Each question carry 3 marks. And lastly, you have a section C, a question number 12. What do we have there? We have a case study there, right? Case study wherein the paragraph or passage will be there and you need to answer the questions based on that. Okay, so with all that information being given to you, let's begin this. Okay, so section A. Now, the very first question, what does this question says? This question says, how much charge is required for following reduction? How much charge is required for following reduction? Second question is, number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons present in copper 3 plus, Fe 3 plus, and lastly we have how many ions are produced from the complex K3AgCN6 in the solution. Okay, now each of this question is carrying 1 mark. Okay, now we're gonna see each one of them. Now the first, Sn, you can see here Sn is going to Sn4 plus, right? How many electrons does it lose? You can see here it is in a 0 oxidation state, right? And here it is in a +4. So that means it is losing how many? It is losing 4 electrons, right? Now that 4 electron means what? It is a 4 mole of electron. It is 4 mole of electron. And what is the charge? Do you know what? The 1 mole of electron holds 1 mole of electron holds how much charge? As we all know, 1 mole of electron holds 96,500 coulomb of charge. What is that? That is also called as Faraday's constant, as you all know, right? So 1 mole of electron is having 96,500 coulomb, or you can say 1 Faraday charge, right? So you are having how many electrons here? You are having 4 electrons here, right? 4 mole of electrons. So therefore, for 4 mole of electrons, your charge would be how much? It will be 4F, or you can say 4 into 96,500 coulomb. Whatever that figure may be, right? That is how you can find out the charge. Okay. Next, number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons present in Cr3 plus and Fe3 plus. Now obviously, to solve such question, firstly we need to write what? We need to write the electronic configuration. Okay, so Cr3 plus. So let's write it now. Firstly, chromium. What is the electronic configuration of chromium? What is the atomic number of chromium? Atomic number of chromium is 24. So electronic configuration becomes argon 4s1 3d5, right? Now out of which how many electrons are getting lost? You can see it's 3 plus, right? So 3 electrons are getting lost. How would 3 electrons get lost?
one electron from s orbital and two electrons from d orbital. So what do you have now? For Cr3 plus, you will be having 4s0 and 3d3. How would you write 3d3? 3d3 would be written as 1, 2 and 3. So basically it will be having how many? It will be having 3 unpaired electrons. Similarly, Fe3 plus. Now, how would you write the electronic configuration of Fe? The electronic configuration for Fe would be written as atomic number 26. It would be argon 4s2 3d6. Right? Now, since it's Fe3 plus, right? So 3 electrons are not present. Basically, it has lost 3 electrons. So out of those 3, 2 electrons would go from S and 1 electron would go from D. So basically, you would be having what? You would be having 3d5 system. And how many unpaired electrons are present in D5? It's nothing but 5. That is why the number of unpaired electrons present by Fe3 plus are 5. Okay, that's it. Now next. So this question has been solved. This has been solved. What is the next question? Next question is how many ions are produced from the complex K3FeCN6 in solution. That means whenever we are trying to dissolve this compound in a given solution, how many ions would it give? So let's see. K3FeCN6 would be dissociated as 3K plus. As we all know, each potassium is having charge of 1 plus, right? So 3 potassium would have charge of 3 plus, and therefore your FeCN6 would be having charge of 3 minus. FeCN6 3 minus. So you can see how many ions are there. You have got 3 ions here of each potassium, and just simple 1 ion from 1 ion having 3 minus charge, obviously. So total charge produced by this compound is how much? It is 4. The 4 out of which 3 cation and 1 anion actually being produced by the dissolution of the following compound. And therefore, the correct answer is what? Correct answer is second option. Okay, that is how you can solve such type of question. Okay, sure. Moving ahead. Next question. What is the next question? In which of the following octagonal complex of cobalt, atomic number 27, will the magnitude of delta O? What is that delta O? It is nothing but a CFSE. It is called as CFSE. What is mean by CFSE? It is called as crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy. So they are asking, out of these 4, which compound would have the highest CFSE? Now see, the magnitude of CFSE is decided by several factors. It is decided by charge on the cation, that means charge on your metal ion, and it is also decided by the nature or a type of ligand that is being interacted with your metal ion. Okay, so basically what does it have? You can see here the oxidation state of cobalt here is how much? It is +3. Here also it's +3. Here also it's +3, and here also it's +3. That means the charge on the metal ion of all the 4 complexes is exactly same. So that means that can be your deciding factor. Then what is your deciding factor? Deciding factor here is obviously it's a ligand. It's a type of ligand. And you know what? There is a series, there is an order which is called as Spectrochemical Series. Okay, or Spectrochemical order. What does Spectrochemical order do? It tells you it is actually a decreasing order from top to bottom. The top wala will be having the strongest crystal field stabilization effect on the given metal ion, and the last wala will be having the weakest. Okay, so here you have to decide what is the order of the ligand, or out of this 4,
which ligand would be having the highest CFSE. And as far as you remember, as far as I also remember, the ligand which is having the highest crystal field stabilization energy is cyanide, because cyanide and CO almost equal to each other. These are the strongest ligand. This ligand imposes the highest crystal field stabilization energy. Therefore, this complex, which is having cyanide in them as a ligand, will be having the highest CFSE. Okay. Therefore, the correct answer here is A. Okay. This question actually is a type of a question which generally been asked in a NEET exam and also in a JEE exam. Okay. I have framed the question in such a way so that it will be helpful for you to prepare for JEE exam as well as NEET exam, and obviously the term 2 exam is obviously there. Okay. But I don't want you to just study the term 2 exam. I want you to prepare for JEE and NEET exam also. So it is going to help you in all of those exams. Okay. Chalo. Moving ahead now. The third question. What is this? Now see, here they have asked us the reason. What reason? Aldehydes reacts faster than ketones in a nucleophilic addition reaction. Firstly, you need to understand what is nucleophilic addition reaction. Firstly, let me just write the carbonyl. What is carbonyl compound? See, this is how your carbonyl compounds are. C double bond O. Now, what do you have? Yes. Now you all know that carbon is having a delta plus here and oxygen is having a delta minus. Now what will happen here? Your ligand will come, or any nucleophile. Suppose I just write Nu here. This nucleophile would come. Now nucleophile is having either a negative charge or a delta minus, obviously. So it would attack here. As soon as it attacks, this bond breaks. Okay. And what does it give you? It gives you C. Here you get a nucleophile and you get the O minus. Okay. Which later on undergoes acidic workup. This later on gives you acidic workup to give you compound like this. Nu goes there and double bond O becomes. So that is the product that you get in a nucleophilic addition reaction. Now, what factor decides? What are the factors which decides how fast your nucleophilic addition reaction would be? Okay. Now, obviously, the strength of this delta plus, or I would say the intensity of that delta plus, would definitely decide how fast the nucleophilic addition reaction would be. But apart from that, see, you need to understand that in aldehydes, you would always have a hydrogen here. It will be constant. In aldehyde, you will be always having hydrogen there. Whereas, if you are talking about the smallest ketone, even if you take the smallest ketone, you will be having at least methyl group there. You will be having, this is the smallest ketone. What is the smallest ketone? Propanol, right? Acetone is the smallest ketone. And if you are talking about the smallest aldehyde, let's talk about CH3. The smallest aldehyde and the smallest ketone. They are right in front of you. Now you tell me, whenever the nucleophile tries to attack, which functional group would impose more steric hindrance? Which functional group would impose more steric hindrance? You can clearly see here, these are what? Just a sec. Yeah. So these are what? These are bulky groups. Okay. So whenever nucleophile tries to attack from this side, they will impose a steric hindrance firstly. Secondly, since two methyl groups are there, as you can see, there are two methyl groups there. Therefore, what happens? Both of them are what? Both of them are electron donating. Both of them are electron donating. If you're talking about aldehyde, you got only one group which is electron. Hydrogen is not electron donor. No. Hydrogen is not electron donor, nor it is electron withdrawal.
Hydrogen is neutral in that aspect. But methyl is electron donor, as we all know. It's a plus pi group, right? So aldehyde is having only one electron donor, whereas the ketone is having two electron donor. And if you want the intensity of this delta plus to be high, you need to have no electron donor group, or if you have, you should have at least less electron donor group. Oh, hi students. Yeah. Okay. So you should have at least less electron donor groups there. So you can see here, aldehyde is having only one electron donor group, whereas ketone is having two electron donor groups. So therefore, delta plus of your aldehyde would be more intensified. Firstly, secondly, the steric hindrance. The steric hindrance imposed or shown by aldehyde would definitely be less than what actually been shown by ketone. And these are the two reasons. These are the two reasons for which nucleophilic addition reaction is being shown faster by aldehyde than ketones. I hope this is helpful for you. Hi Shabana, hi Prithi. Okay, so moving ahead now. Now section B. Now as I earlier told you, section A would be of 6 marks. There will be 3 questions, each carrying 2 marks. Now in section B, there are total 8 questions from question number 4 to question number 11. Okay, each carrying 3 marks, and then section C that we will see. Okay, sure. So section number so yeah, so start. Answer the first question. Now the fourth question that we have. What is this fourth question? Identify the complexes. Identify the complexes which are expected to be colored and explained. Now, what complexes are actually expected to be colored? Do you know what? Which complexes are to be colored? Only those complexes are to be colored which are having at least one d electron in them. For any compound, so yeah, so as I was saying, titanium is in +4, copper is in a +1, okay, chromium is in a +3. So how would you write this electronic configuration? Argon 4s2. Basically, look, let me write it. Let me correct it actually. It is 4s1 3d 5, right? And since your chromium is in a +3, since your chromium is in a +3, what happens here? 1 electron from here and 2 electron from here. And what did you have? You have a D3 system. Like I told you, all the systems which are having electrons from D1 to D9 are colored. Since it's a D3, so therefore it has to be colored, and it is colored. So therefore, that is your answer there. Okay. Next, name the reagent. Name the reagent which performs the following transformation. Name the reagent which performs the following transformation. What is the transformation? Transformation is 1 propanol to propanol. 1 propanol to propanol. It is very simple. 1 propanol, that means what? It's alcohol, right? So basically, this is your compound. Okay, 1 propanol. What are they asking? They are asking it to get converted to propanol. That means double bond OH, right? Aldehyde. Basically, they are asking alcohol to getting converted to aldehyde. How would you convert it? Obviously, you need oxidizing agent. And what are some of the oxidizing agent? Obviously, you can have KMnO4 there. You can have K2Cr2O7 there. All of this oxidizing agent can oxidize alcohol to aldehyde. So that is your answer. And next, why physis option? Why physis option is multi-layer, whereas chemist option is mono-layered. Okay, why physis option is multi-layer, whereas
why chemist option is monolayered. Let's see. Now, you know what adsorption is, right? So if this is your compound, then this is the compound which is getting adsorbed over it, like, okay. So this is what now? See, this is how your adsorption. Now, what is the difference? What is the difference between physics option and chemist option? See, physics option is a pure physical interaction, as the name suggests. Physics option is a pure physical interaction. What is chemist option? Chemist option is a kind of a chemical bond. Chemist option is a kind of a chemical bond formed between adsorbent and adsorbate. It is a kind of a chemical bond formed between adsorbent and adsorbate. Now let me tell you a simple thing. Suppose you have an alkene like this. Suppose this surface, this is adsorbate and adsorbate. Okay. So this is your alkene. Just a sec. Here. So suppose this is your alkene. Okay. CH2 double bond CH2. And now suppose, let me tell you firstly why chemist option is monolayered. Now you are adding hydrogen into this. So suppose hydrogen is getting adsorbed over it, okay? which we are saying chemist option, right? Your hydrogen getting adsorbed over it here. So what do you get now? CH2 hydrogen, CH2. So the hydrogen, which seems to have formed a bond now, it is what? It has been adsorbed. Right? This is having adsorbed now. Okay? This is nothing but what? Adsorbed. Now this is what? This was your alkene. And what have we formed now? We have formed alkene. Right? Okay. Now you tell me this. Consider this as the first layer. Consider this as the first layer. Now you tell me, can I absorb one more layer of a hydrogen from here? Can I absorb one more layer from here? No, I cannot. Why? Because there is no double bond now. There is no double bond there. So I cannot absorb it now. That means chemist option is what? It's a monolayer. Whereas whenever you are talking about physics option, it is not a chemical bond at all. So since it's not a chemical bond, that means what? It is just a physical interaction. And you can add as many layers of adsorbate as you want. That is why physics option is multi-layered and chemist option is monolayered. Okay, I hope this is helpful for you to understand the difference between both these processes. Okay, so moving ahead. Now bring out the following transformation. They have asked us to bring out some of the transformation. What are those? The very first is ethylene to 3-hydroxy butanol. Now, whenever you are doing such transformation, okay, always remember to write the complete structure. Now, ethylene is what? CH2 double bond CH2, and what have they asked us to form? 3-hydroxy butanol. Butanol means how many carbon atoms are there? There are 4 carbon atoms, just like this. Butanol, so it's an aldehyde. So C double bond O, hydrogen 1, 2, 3, 3-hydroxy butanol. Now let me approach this problem from a very simple way. How? Let me tell you. Now, see how many carbon atoms are there? Total carbon atoms here are, how many are here? 4.
right? So it's a kind of a step-up reaction. Firstly. Secondly, you are starting with alkene. What do you want to form? You want to form an aldehyde. Now you need to understand alkene can be, see, whenever you're thinking about a possibility, what possibility you can think? The alkene can be converted to alkyl halide, right? By obviously hydrogenation. Alkene can be converted to alcohol by hydration, obviously. Alkene can be converted to alkane? Yes. So these are the only three conversion which alkene can do. Right? But there are other also. But you cannot directly convert alkene into aldehyde. And simply by increasing number of carbon atoms also. That is not possible, right? So what is the simple way? So you need to understand that alcohol. Alcohol is at the center. Alcohol is at the center of the whole chemistry. You can convert almost you can convert alcohol almost to any other compound. Almost. I'm not saying alcohol can be converted to any other compound. I'm saying almost. See, even if you can't convert alcohol directly into your given compound, you can at least find a middle way. For example, if you want to form an acid, what do? You will convert alcohol into aldehyde or ketone. Then by performing further oxidation, that will be converted into acid. Okay. Then acid can be converted into amides and other compound. Okay. So we will discuss about that organic pathways. But for the time being, let me tell you. Let me approach how can we let me tell you how can we approach this. So alcohol. So alkene is there. How would you convert alkene? Sorry, your alkene into alcohol. You just do the hydration. H2O in presence of H plus I. Okay, so I'm not gonna tell you the whole mechanism behind that because for that we have some another session. The time being, I'm just gonna tell you how can we convert it. Okay. Hi Imran. Hi. Very good evening. So your alkene now would give you what? It would give you compound like this. CH3, CH2OH. It's an ethanol. Can you convert ethanol into this compound? You cannot. So what will you do now? You will perform the oxidation of this. So when you perform the oxidation of this, it will give you what? It would give you aldehyde, ethanol. Now, how can you convert ethanol into this compound? See, there is the one reaction which is called as, that reaction is called as aldol condensation. Aldol condensation. Now, I'm not going to go much detail into it because you already know. You have already studied. We are solving sample paper. Hello, Sai Praniti. Hello, very good evening. So, we are solving sample paper, right? That means you must have studied at least something. So, I'm going to take you a revision way. Right? So, aldol condensation. What aldol condensation is all about? You're going to put a base here. What base will do? Base will abstract the hydrogen from here, right? And it will give you what? CH2 minus CHO. So that is basically what? It's a carbanion. Now what that carbanion would do? It would attack on the another aldehyde, another acetaldehyde molecule. This. It would attack here, double bond would break, and it will give you what? It would give you CH2 CHO minus CH3 CH. Now on performing acidic workup of this, you would get CHO, CH2, COH and CH3. And what is that? That is nothing but 3-hydroxybutane. So that is the way by which you can convert. Now I know. Now you might say, many of you might say, sir, such a big question would never be asked for 1 mark. I know that. It will be asked for either 2 marks or 3 marks in your given exam. But I wanted to cover
as much organic chemistry as possible in those small set or small set number of questions. That is why I'm doing it. Okay. So sure. So one is done. Now next. So this is done. Next is propanol to methanol. Okay. Now we don't have space here. So we're gonna go to the next page. What is that? Propanol to methanol. Right? So this is your propanol. You need to convert that to what? Methanol. Okay. Now this is what? This is a step down reaction. How? See, how many carbon atoms are there? Carbon atoms are 3, and here it's 1 only. Right? How can you do step down of aldehyde compound? It's very difficult. See, you can perform a step down of ketones by performing oxidation. But when you do that, your ketones generally gets converted to acids. And here, is your ketone getting converted to aldehyde? No. Here, your ketone is getting converted to aldehyde, methanol. It's not getting converted to acid. So how would you do? See, you will do what? You will reduce it by using obviously NiALH4, or you can also do that by NaBH4, or you can perform this reduction by radinickel and hydrogen, or palladium and hydrogen, or platinum and hydrogen. So these are the 5 ways by which you can reduce this ketone into secondary alcohol. Now, can you convert secondary alcohol into methanol? No, it's not possible, right? So what would you do? Now, you would perform a dehydration here. You will put H plus ion here. Whenever you put H plus ion into alcohol, what do you get? You get an alkene. Right? You get an alkene here. Now, what would you do? You would perform the ozonolysis of O3. Now, let me give you a simple trick of ozonolysis. See, whenever you perform ozonolysis, what actually happens is that this part goes with the oxygen, and this part also goes with oxygen. It is that simple. You don't need to write the mechanism. You don't need to write all those intermediates. There is no need of that. See, in exam, be it a JEE, be it NEET, be it SAT, any exam, they would ask you what is your product. Here, I'm not talking about advanced exam. I'm talking about JEE mains exam, obviously NEET. So, when you're talking about what would they ask you, if I give you a given compound, would I get this compound? And if it is, what are the ways? So they will ask you about the ways, or they will ask you, they will give you reactant and the product question mark. Then there are 4 options. Okay, that kind of question is generally asked, right? So that is why I'm giving you a trick. What is that? So this part, there is a 1 carbon here and 2 hydrogen, obviously. Okay? 2 hydrogen like this. This goes with oxygen, and here also this carbon double bond forms a double bond with oxygen. So what would this give you? This would give you 2 compounds. One is CH3, C double bond OH, which is your acetaldehyde, and this would give you what? This would give you C double bond O methanol. So this will give you methanol, that will give you ethanol. That is how you can convert this ketone into that methanol or formaldehyde. These are the ways by which you can perform these organic transformations. Okay? Now, what is the further reaction? There is one more reaction here. Nitrobenzene. This is done. Nitrobenzene to benzoic acid. How can you do it? So, nitrobenzene, right? Firstly, you need to reduce this. Obviously, by what? Reducing agent. So, I will just write the read. Read means what? Reduction, right? So, this will give me what? This will give me aniline. NH2, right? Now, how would you convert NH2 into benzoic acid? Simply, you need to do what? You need to put Sandmeyer's reagent there. Or let me take you to the next page rather. That will be rather helpful. Okay? Yeah. I will write it down here now.
So this is my aniline. By putting Sandwich reagent, what is that? HNO2 and HCl. I would have a aryl diazonium salt here. I would have aryl diazonium salt. This compound. Now what would I do? After this, I would put CuCN and KCN. That would give me cyanobenzene. Okay. And cyanobenzene, whenever you perform a whole active workup on cyanobenzene, whenever you perform the whole active workup on cyanobenzene or cyano compound, it gets converted into acid. And that is how you can convert nitrobenzene into benzoic acid. This is the way by which you can perform this kind of transformation. Okay, so moving ahead. Now, the next question, question number 6. What does this question say? This compound is paramagnetic, while that compound is diamagnetic. Explain why. Okay. Now, obviously, for this I will take the blank slide which is on the next page. So Cr NH3 6 3 plus is paramagnetic, right? That is what they are saying. And NiCN4 2 minus is diamagnetic. Why? So let's decode why it is that way. So chromiums, you can see chromium 3 plus is already written there, right? So electronic configuration argon 4s1 3d5, right? That is the electronic configuration of your chromium. But now your chromium has lost 3 electrons. So how would you write it now? Chromium atomic number obviously is still 24 plus. So you will have argon 4s0 obviously, because 1 electron goes from here, 2 electron goes from D. So what did you have? D3. Now D3 is what? It is an odd number of electrons. So no matter what type of ligand you would have, you would always have at least one unpaired electron. When you are having at least one unpaired electron, the system would surely be what? Magnetic. Right? That is what would happen here. If I have to show you here, it is D. Then you have what? See, if I have to arrange all these 3 electrons, how would I arrange? 1, 2, 3. Now you might ask, sir, why did you arrange in that way? Why you did not put 1, 2, 3 like that? It is because this ammonia is a what? It's a strong filled ligand. It is strong filled ligand. And strong filled ligand does what? Strong filled ligand causes the pairing of d electrons. Okay, sure. Moving ahead. So that is the reason this compound CrNH3 plus is paramagnetic. Now let's look at the second compound. What was the second compound? It was NiCN4 2 minus. Right? They were asking why the compound is diamagnetic. Let's decode it. So, see your nickel. What is the oxidation state of nickel here? You can see here the oxidation state of nickel is +2, right? If I have to write the electronic configuration of nickel, atomic number 28, how would it be? Argon 4s2 3d8. 4s2 3d8, right? But since your nickel is in a +2, this electron goes. So what would you have now? Ni +2 would be having argon 3d8. Right? Now, how would you arrange those d electrons? These d electrons, if I have to arrange, it will be arranged like this: 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Right? That's how your D would be. Then you will be having 4S here and 4P. See. So this D, 1S, and out of this 3, 2P would be combined together. That will be giving you DSP2 hybridization. Okay. Now, why did this happen? It's because cyanide is a very strong ligand field. As we had seen in one of the question earlier, cyanide and carbonyl, they are almost of the same strain. So this ligand does what? This ligand causes the pairing of electrons. So even if your nickel had an 8 electrons, all the electrons got paired, leaving no unpaired electron there. Now since 8 is what? 8 is an even number. That is why all the electrons got paired, leaving no unpaired electron there, making your compound completely diamagnetic. Unlike it happened here. Here also you have a strong ligand field. Okay, you have ammonia is a very strong ligand field, but it was having odd number of electrons. Okay, I hope you find this helpful. Okay, sure. Moving ahead. Did we miss something? Yeah, this question was yet to be solved. Now, what was this question? Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity in a nucleophilic addition reaction. Now, I had already told you what is nucleophilic addition reaction. Right? It is nothing but the addition reaction shown by carbonyl compound. Carbonyl compounds are having C double bond O in them. Right? So basically, they are what? They are unsaturated compounds. Right? Now, these unsaturated compounds, whenever undergoes nucleophile adding to them, you get a product. That product actually gets by nucleophilic addition reaction. Now, as I told you earlier, all the nucleophilic addition reaction, their strain or the speed with which they are reacting is proportional to the intensity of the delta plus and the steric hindrance on the carbonyl carbon. Okay, so let's write this compound. You will understand. Ethanol. Or let me change the color rather. Oh, I should not take this. Okay, so ethanol. How would you write ethanol? CH3 C double bond OH. Right? Propanol. Propanol is C2H5 C double bond OH. Then you have what? Propanol, which is nothing but your acetone. And lastly, you will be having butanol. C2H5 C double bond O CH. Now let me tell you, we know that between aldehyde and ketones, aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction, as we have already seen. Okay, so as far as this case goes, you can see here, this part is common. This part is common between both of these. Right? So what is the deciding factor? Deciding factor is this. Now between methyl and ethyl, which is more electron donor? We know that more the number of carbon atoms, more is the electron donating tendency. So therefore, between methyl and ethyl, ethyl is more electron donating, right? Because of which this will lessen, ethyl would lessen the intensity of delta plus to the more extent that methyl could do. And therefore, your methyl, I would rather say ethanol, would be more reactive towards nucleophilic addition reaction than propanol. Now, between propanol and propanol, which would be more reactive? Again, we had seen both of these are having same number of carbon atoms, right? But propanol would be having more steric hindrance whenever the nucleophile tries to attack here. Firstly, secondly, the intensity of your delta plus. Intensity of delta plus also would be more here. That is why propanol is more reactive than propanol, and same logic or same analogy is applicable
whenever you are comparing propanol with butanol, obviously butanol is having more molecular groups around it than you have in propanol, firstly. Secondly, see, methyl is common in both these cases. But here you have ethyl, here you have a methyl. So obviously ethyl would be more electron donor, which will lessen the effect of delta plus. Therefore, the order would be ethanol, then propanol, then propanol, and then butanol. That would be the complete order of all the compounds towards nucleophilic addition reaction. Okay, sure. Moving ahead. Question number 7. Now, what is it? See, there are some questions which you can solve immediately. It doesn't take that much time. Okay. See here. How much electricity is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to the O2? Okay. How much electricity? That means they are asking how much Faraday basically. Now let's see how do you convert H2O to O2. Okay. So let me take the yellow colored. Yeah. So let's write this reaction. 2H2O2 is getting converted to what? It is getting converted to O2. H2O plus O2. So they are asking this to this transformation. Okay. Yeah. So you can see here the oxidation state of oxygen here is how much? It is -1, right? The oxidation state of oxygen in peroxide is -1. From there, it is going to 0 oxidation state. Right, in O2 it's 0. No? So one oxygen is going from -1 to 0. That means the decrease in OS is by 1, right? So basically it must be losing, sorry, not losing, yeah, it must be losing 1 electron. But there are how many oxygen in O2? In O2 there are 2 oxygen atoms, right? So that means it must be what? It must be losing 2 electrons. To 2 electrons means what? 2 electron means 2 Faraday, right? They are asking in Coulomb now. So 2 Faraday would be required for this. 2 Faraday. Each Faraday is equal to how much? 96,500 Coulomb, right? You can solve that. It's that easy. Similarly, here APO is going from APO to Fe2O3. In APO, your ion is in a +2, right? In just a sec. Yeah. See, in FeO, your ion is in a +2, and in Fe2O3, your ion is in a +3. So each ion is going from +2 to +3, right? That means basically it is what? Manju creation. Hello, sir. Okay. Hi. Manoj. Okay. You are Manoj. Okay. Hi. So, each ion is going from FeO to Fe2O3. If you are talking about only one FeO, so you can see here ion is going from +2 to +3. That means it is losing 1 complete electron. So 1 complete electron, that means what? 1 Faraday of charge, or you can say 1 into 96,500 Coulomb of the charge is required for conversion of 1 FeO to Fe2O3. Okay. So we solved all of this. Now the next question is, give 2 examples of heterogeneous catalysis. Now we know that what is the difference between homogeneous and heterogeneous? Homogeneous catalysis is the one where the phase of reactant, product and catalyst is exactly same. As the word says, homogeneous, same, geneous forming, same forming. That means their state of matter is exactly same. Heterogeneous, what is meant by hetero? Hetero means different, geneous means forming. So here
the state of your reactant and state of your catalyst is completely different. So what are the examples? They are asking two examples of heterogeneous catalyst. So I can give you very first example, your ethylene or your alkene reacting with ranitidine and hydrogen. It gives you what? It gives you ethane, right? Here, your alkene is present in what? It's in a gaseous phase. Ranitidine is present in a solid state. So state सर माँ हिंदी मीडियम से हो, अच्छा बेटा तुम हिंदी मीडियम से हो, कोई बात नहीं, चलेगा, हिंदी तो हिंदी। देखो यहाँ पे क्या है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो तुम्हारा जो अल्कीन है वो अल्कीन का क्या है, अल्कीन तुम्हारा गैसियस फेज में है, ओके, और रानी निकेल का फेज क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड फेज गैसियस फेज दोनों फेज अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो इसका और एक एग्जांपल है, मैं तुमको और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फिर नाइट्रोजन गैसियस फेज में है, बराबर, हाइड्रोजन भी तुम्हारा कौन से फेज में है, गैसियस फेज में है। लेकिन जो आयन तुमने यहां पे लिया है एज अ कैटलिस्ट, वो कौन से फेज में है, वो सॉलिड स्टेट में है। देयरफॉर ये तुमको देगा अमोनिया। अमोनिया का फेज क्या है, गैसियस फेज। तो सब गैसियस फेज में है, सिवाय तुम्हारे कैटलिस्ट के वो सॉलिड फेज में है। तो तुम्हारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हो गया। ओके मनुज, इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ ये भी अपना सॉल्व हो गया, राइट? चलो मूविंग अहेड नाउ। अरे तो ये अगला वाला क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है। चलो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, थोड़ा पीछे जाता हूं। An organic compound contains 69.77% of carbon, 11.63% हाइड्रोजन एंड बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बचा हुआ जो है वो है ऑक्सीजन है। अब उन्होंने क्या बोला है, ये जो कंपाउंड तुम्हारा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर कंपाउंड इज 86. It does not reduce the tolerance reagent. अब एक बात तुम्हारी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब ये अल्डिहाइड श्योरली नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड अगर होगा तो वो टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। मैंने बोला कि वो टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब वो अल्डिहाइड नहीं है, ये तो श्योर। उसके बाद बट इट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड व्हिच इज, वो क्या है, NaHSO3। हमको पता है ओनली सिर्फ वही कंपाउंड NaHSO3 के साथ NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में श्योरली कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप होगा तो ही वो एडिशन प्रोडक्ट दिखाएगा तुम्हारे NaHSO3 के साथ। ओके, सो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हमको पता है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कुछ अल्डिहाइड भी देते हैं, लेकिन वही कीटोन देंगे तुमको वो जो लाइव क्लास किस टाइम से होती है। तो बेटा लाइव क्लास 8 बजे से होती है, ठीक है। ये 11-12 का चैनल है, तो यहाँ पे हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं केमिस्ट्री का हूं तो मैं केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। परसों बायोलॉजी का क्लास होगा, उसके बाद फिजिक्स का होगा, और उसका टाइमिंग 8 बजे ही होगा, सो दैट ये तुम्हारे स्कूल के या कॉलेज के टाइम में इंटरफेयर ना कर सके। चलो, तो जैसे मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं, लेकिन जैसे हमको पता है कि ये अल्डिहाइड नहीं होने वाला, ये अल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि ये टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, तो ये कीटोन ही होगा। और कौन सा कीटोन, सिर्फ मिथाइल कीटोन, मतलब जिस कंपाउंड में ऐसा ग्रुप होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, जिन जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होता है वही तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ओके, अब और उन्होंने क्या बोला है कि जब तुम विगरस ऑक्सीडेशन इसका कराओगे,
whenever you give a vigorous oxidation, it gives ethanoic and propanoic acid. अब इथेनॉइक एसिड मतलब कितने कार्बन हो गए वहां पे? इथेनॉइक एसिड मतलब 2 कार्बन, और प्रोपैनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। उन्होंने क्या बोला कि जब कभी भी ये कीटोन का तुम विगरस ऑक्सीडेशन करोगे तो पॉप्स रूल है, पॉप्स रूल तुमने पढ़ाई होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट ये तुमको 2 कार्बन वाला इथेनॉइक एसिड देगा एंड 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड देगा। इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 + 2 5। इसका मतलब तुम्हारे कीटोन में 5 कार्बन होने ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। सर तुम बहुत अच्छी रीडिंग कर पा रहे हो, ओके, थैंक यू मनोज। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 69.77% क्या है तुम्हारा? कार्बन है, राइट। हाइड्रोजन कितना है? 11 पॉइंट वो यार 63%। अब ये टोटल कितना हो रहा है? 7 + 3 0 + 1 6 + 7 + 7 14 4 1 9 + 2 11 1 81.40। तो 81.40 उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 100 - 81.40 कितना होता है वो? 18.60, राइट। तो 18.60% क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन, राइट। नाउ हाउ ये प्रॉब्लम जो तुम कैसे सॉल्व करते हो? यहां पे क्या करते हो? हर कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से क्या करते हो? डिवाइड करते हो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, राइट। हाँ, तो हाइड्रोजन कार्बन का कितना आएगा? 69.77% डिवाइड बाय 12। 12 5 60 बचे 9.7, 12 8 96, फिर आएगा 17 5.81। तो ये आ गया 5.81। हाइड्रोजन जितना दिख रहा है उतना ही आएगा 11.60, राइट। अब बचा क्या है? ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा? 18.60 डिवाइड बाय 16। 16 1 16, you got 2 6 16 1 16 1 0 0 16 6 96, 1.16। अब ये 1.16 से तुम हर देखो ये तुमने सॉल्व किया होगा 11 में, राइट। यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वॉट एवर जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर से हर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा? 5.81 डिवाइड बाय 1.16, 11.63 डिवाइड बाय 1.16 and 1.16 डिवाइड बाय 1.16। अब इतना मैथ तो तुम्हें बहुत अच्छे तरह से आता है। That 1 5 5, 0.16 5 0.80, तो इसका मतलब जी कितना है? 5 आया, राइट। तो 5 कार्बन एटम है, ये तो हमें पहले से पता है, वी ऑलरेडी नो इट। अब यहां पे भी एक आ रहा है, ये तो सिंपल सीधा सीधा साधा गणित है। अब ये क्या है? 11.63 डिवाइडेड बाय क्या है वो? 1.16। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन मैं इसको सिंपल करूंगा। क्या करूंगा मैं? इसको ना सीधा 10 से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 10 से 100 से मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा? ये 1160 बन जाएगा और ये क्या बनेगा? 116। तो सामने दिख रहा है, इसको इसे डिवाइड किया तो 10 ऑलमोस्ट 10 आएगा, राइट। 10 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा, मतलब वो ऑलमोस्ट क्या है? 10 है। तो इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड क्या बन गया? C5H10O, दैट इज योर कंपाउंड, राइट। अब तक हमें एग्जैक्ट सर तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हो, अच्छा ओके थैंक यू, लेकिन तुमने तो बोला हिंदी में लो तो इसलिए मैं हिंदी में ले रहा हूं, ठीक है। तुम चाहे तो इंग्लिश में भी ले सकता हो, ठीक है। एनीवेज डजंट मैटर, कंटेंट तुमको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी तो क्या चलता है। तो C5H10O, अब हम लोग क्या करेंगे? उसका जो एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब C5 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 है, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 बराबर 60 प्लस 10 हाइड्रोजन कितना हो गया 70, ऑक्सीजन कितना है 16, तो कितना हो गया 86, और अपना जो मोलिकुलर मास उन्होंने दिया था वो कितना दिया था वो भी 86 ही था, राइट। इसका मतलब तुम्हारा कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10OE है, ओके। अब C5H10O जैसे मैंने बोला अल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो सकता है कीटोन। कीटोन भी कौन सा होना चाहिए मिथाइल कीटोन। इसका मतलब इस कंपाउंड में ये ग्रुप तो होना ही चाहिए, कौन सा ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड, ये ग्रुप होना ही चाहिए। अब ये दो कार्बन तो आ गया, कितने कार्बन बचे 3 कार्बन बचे, उसको कैसे लिखोगे CH2 CH2 CH, इस तरह से what have you got, you have got pentanol. You can see here it is nothing but what, it is a pentanol. So that is what your final answer is, okay. So तो ये तुम्हारा पेंटानॉल है, okay. I hope this must have been pretty much clear to you, okay. अब अगला क्या है, although phenoxide ion has more number of resolving structures than carboxylate ion, carboxylic acid is stronger acid than phenol. अब फिनॉक्साइड आयन की अगर तुम बात करोगे तो फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है, यस O माइनस, राइट। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या है, फिनॉक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ योर फिनॉल, राइट। ये बना किससे है, इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम फिनॉल ओनली, ओके। एंड दूसरा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं CH3COOH, ये जब कभी भी तुम्हारा H प्लस आयन देगा ये तुमको देगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसे ही घूमता रहेगा, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज ये जो है ऑक्सीजन का इस कार्बन पे और इस कार्बन पे घूमता रहेगा। अब देखो प्लीज स्पीक टू हिंदी, ओके। मैं हिंदी से हिंदी में बात करूँ तो देखो सिंपल सी चीज है, फेनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या कराएगा फैलाएगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो फैलाएगा, कहां पे फैलाएगा कार्बन पे फैलाएगा। कौन से कार्बन पे फैलाएगा, जो कार्बन ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, और ऑर्थो में कितने कार्बन आ रहे हैं ये देखो, ऑर्थो पे ये वाला कार्बन आ रहा है ये वाला आ रहा है, ये जो कार्बन है ये पैरा पे आ रहा है। तो जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है ना जो ऑक्सीजन में आ रहा है वो 3 कार्बन में फैल गए। अब देखो जब कभी भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फैल जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब कभी भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है उसका जो एसिड होता है उसकी एसिडिटी भी बढ़ती है। ये इतना सिंपल है। तो अब वो चीज यहां पे 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब इंटेंसिटी 3 गुना कम हो रही है, और कार्बोक्सिलेट एनायन में 2 जगह, ये देखो ये एक जगह ये एक जगह, दिस इज द फर्स्ट सेकंड। कार्बोक्सिलेट एनायन में जो कि कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 ही जगह जा रहा है, 2 ही जगह बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो 2 जगह फैलने की वजह से उसकी इंटेंसिटी 2 गुना ही कम होगी, वेयर यहां पे 3 गुना कम हो रही है। तो तुमको जाहिर ऐसा लग सकता है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे और एक रीजन है। क्या रीजन है? तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कितनी जगह फैल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है
लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो कौन से एलिमेंट पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोक्सिलेट एनायन में, वो दोनों जगह जहां फैल रहा है वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जहां 3 जगह फैल रहा है वो कार्बन है। और ऑक्सीजन में और नाइट कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन में, और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे फैलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा दैन कि वो कार्बन पे फैल रहा है। इसीलिए ये कार्बोक्सिलेट एनायन, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये ज्यादा स्टेबल है, रिजल्टिंग कि तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। ओके, आई होप तुमको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो अब आगे निकलते हैं। या अब आगे वाला क्या, अमोंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो सिंपल है, जब कभी भी तुमको मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है तब तुमको हमेशा ऐसे लिगैंड की तरफ देखना है। जो लिगैंड, देखो स्टेबिलिटी दो चीजों से स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। एक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, और दूसरा है तुम्हारी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कंपाउंड देख के तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हो तो तुमको मेटल का चार्ज देखना पड़ेगा एंड लिगैंड की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। जितना मेटल का चार्ज होगा ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना लिगैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहां अगर देखोगे तो हर जगह देखो आयन ही है, आयन आयन आयन, हर जगह उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 ही है। यहां भी +3 और यहां भी प्लस। इसका मतलब ये चारों कंपाउंड में तुम्हारे पास Fe+3 ही है, तो वो फैक्टर तो कॉमन हो गया। तो इसका मतलब वो फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा, तो कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? तुम्हारे जो लिगैंड से वो डिसाइड करेंगे। अब तुम्हारे पास जितने भी लिगैंड है, उन लिगैंड में सबसे ज्यादा ऊपर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन है? तो तुमने अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करी है तो अच्छा है, और याद नहीं भी करी है तो हमारे चैनल पे, ये जो चैनल 11-12 का, यहाँ पे तुमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखने का ट्रिक मिल जाएगा। वैसे तुमको बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, फिजिक्स मैथ के भी मिलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इन चारों लिगैंड में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है कौन सा है? अमोनिया। अमोनिया इन चारों में सबसे ऊपर आता है, और उसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई Mn2+ compounds are more stable than Fe2+ towards oxidation to their +3 state? अब यहां पे सिंपल है, तुमको यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो लिखने से तुमको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है? 25, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? आर्गॉन 4s2 3d, ठीक है, बराबर। तो इसमें अगर +2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे, तुमको क्या मिलेगा? d5। d5 क्या है? हाफ फील्ड। और तुमको पता होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल p का हो p3, d का हो d5, या फिर f का हो f7। तो ये d5 सिस्टम है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब Fe+3 की अगर तुम बात करोगे तो आयन का एटॉमिक नंबर है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गॉन 4s2 3d। तो अगर तुम आयन को +2 में डालोगे तो क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? d6। क्या d6 हाफ फील्ड है? क्या d6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? नहीं है। वो हाफ फील्ड कब बनेगा? जब d6 से और एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, और d क्या बनेगा? d5। तो इसीलिए तुम्हारा आयन +2 में स्टेबल नहीं है, वो +3 में स्टेबल है, क्योंकि +3 क्या है? +2 मतलब d6, तो +3 क्या होगा? d5। तो d5 इज व्हाट? half filled, right? That is why Mn+2
आयरन +3 में स्टेबल होगा, +2 में, Mn मैग्नीज जो है वो +2 में स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास यहाँ पे D5 है और आयरन में +3 में D5 है। इसीलिए अगर +2 की तुम बात करोगे तो मैग्नीज ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अगला वाला, write down the electronic configuration of the following complex. Now this is quite easy for you, right? क्रोमियम 3 का हम कई बार लिख चुके हैं। कॉपर 1 प्लस, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर एटॉमिक नंबर 29, आर्गॉन 4s1 3d10 +1 बोला है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या बचेगा? d10, राइट? इट्स क्वाइट इजी। वही Mn2 प्लस का मैंने अभी भी लिखा है इधर ऊपर। इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। और मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो? नंबर 1 आंसर दिया है सिल्वर फर्स्ट कॉलर राइट, क्या है? समझ में नहीं आया मुझे बेटा। ठीक है, एनीवेज चलो आगे निकलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन, अब 10वां क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर फ्लोराइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स more stable in their higher oxidation state compared to the lower oxidation state? तो देखो, अब फ्लोराइड जो है ना, फ्लोराइड जब कभी भी बॉन्ड बनाता है, जब कभी भी फ्लोराइड बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व। और तुमको केमिस्ट्री में या फिर अगर तुमको मैं थर्मोडायनेमिक्स की भाषा समझाओ तो कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जब घट रहा होता है तब अगर उससे एनर्जी इवॉल्व होती है तो इवॉल्व तो होती है। जब कभी भी केमिस्ट्री में कुछ भी बनता है तो एनर्जी हमेशा इवॉल्व होती ही होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है उतनी वो प्रोसेस फास्टर होती है। या फिर मैं अलग ऐसे बोलूं, समझो ये प्रोसेस हो रहा है और ये एनर्जी निकल रही है, तो ये एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी उतना ये प्रोसेस या ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है? Why are fluorides or transition metals more stable in their higher oxidation state than their lower oxidation state? तो जब कभी भी समझ लो कोई मेटल है और फ्लोराइड है, तो ये मेटल अगर 2 प्लस में है तो 2 फ्लोराइड आएंगे, बराबर। अगर ये मेटल तुम्हारा 4 प्लस में है तो तुम्हारे पास 4 फ्लोराइड आएंगे। तो जितने ज्यादा फ्लोराइड आएंगे उतना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगा। जितना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगा उतना रिजल्टिंग कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड दैट इज व्हाई फ्लोराइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही है देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट, which one of the following compound would feel attraction when placed in magnetic field? Basically they have asked is that which compound out of these three or which species out of these three is paramagnetic? So it's very simple. We need to see unpaired electron, right? Atomic number of cobalt is 27. Its electronic configuration is argon 4s2 3d7। तो +2 मतलब क्या होगा कि s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचा? d7। d7 is what? It's an odd number. d7 is an odd number, तो ये श्योरली पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयरिंग भी हो जाती है 7 की तो 6 की पेयरिंग होगी ना, 7वां इलेक्ट्रॉन तो बचा ही रहेगा। एंड वो 7वें इलेक्ट्रॉन की वजह से इट विल फील अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर it would be paramagnetic, and ये वो कंपाउंड होगा which will feel attracted to your magnetic field. Okay, Ag+ की बात करोगे तो वो D10 सिस्टम है, Zn+2 की बात करोगे तो वो भी D10 सिस्टम है, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4s2 3d10, राइट। जब तुम जिंक +2 की बात कर रहे हो तो 4s2 मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, D के कितने बचे? 10। तो तुम्हारा कंपाउंड अगर पैरामैग्नेटिक होना चाहिए तो उसमें एटलीस्ट एक तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और D0 और D10 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो वो तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। और Ti4+ उसमें भी वो क्या है? वो D0 सिस्टम, तो इस वजह से ये चारों will not get attracted to magnetic field. Okay? Now the last, it has been observed that
the first ionization energy of 5D series of transition elements are higher than that of 3D and 4D series. Explain why. Okay? अब ये सिंपल एक वर्ड में तुमको बताना है, क्योंकि एक मार्क का बहुत बड़ा तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं तुमको बताऊंगा बड़ा, क्योंकि माय जॉब इज टू टेल यू दैट. ओके, तो देखो ये तुम्हारा 3D सीरीज के मेटल्स है, ये 4D सीरीज के और ये 5D सीरीज के. और तुमको पता होगा कि जब कभी भी तुम 5D सीरीज लिखते हो तो यहाँ पे बीच में क्या आता है, यहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट आता है, यहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, फिर तुम्हारा 5D सीरीज यहाँ से कंटिन्यू होता है. ठीक है, तो क्योंकि ए ब्लॉक एलिमेंट बीच में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 4F. अब 4F जब आता है तब क्या होता है, 4F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शेडिंग इफेक्ट है, वो बहुत कम है. जैसे अगर तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल. तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर चार्ज लास्ट शेल तक फैलता रहता है. ओके, लेकिन क्या होता है, आखिरी शेल तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि जो अंदर के शेल होते हैं, वो अंदर के शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी कुछ ना किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी वो s के होंगे, कभी p के होंगे, कभी d के होंगे, कभी f के होंगे. तो वो न्यूक्लियर चार्ज सोक कर लेते हैं. उस वजह से जो आखिरी तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता. उस वजह से जो लास्ट वाली शेल है, दे फील लेस अट्रैक्टेड टू योर न्यूक्लियस एंड दे वुड गेट स्लाइटली पुश्ड आउटसाइड. अब जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा होगा, ओके, लेकिन तो ये जो शील्डिंग है, ये जो सोक करने की टेंडेंसी, जो अंदर के जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है जो सोक कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, ये जो टेंडेंसी है ये सबसे ज्यादा होती है s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की. तो क्योंकि 5D शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स में 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. उस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आखिरी शेल तक, लास्ट शेल तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है. उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है. तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होने के वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. अब 3D 4D में ये नहीं होगा, क्योंकि 3D 4D में जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4f वाले नहीं है, वो d या p वाले हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा सोख लेते हैं और आखिरी शेल तक न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं पहुंच पाता जितना 5D में पहुंच रहा है. इस वजह से 3D 4D वाले मेटल का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो मतलब क्या, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी है वो कम है और 5D की ज्यादा है. तो ये वो रीजन है जो इस चीज को जस्टिफाई करता है. ठीक है, चलो नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन डायग्राम. ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन डायग्राम है. इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि देखो ये करोजन का डायग्राम है, तुम्हारी सिंपलिसिटी के लिए मैं फिर से बता दूं कि ये करोजन का डायग्राम है. यहां पे तुम देख सकते हो आयन Fe2 प्लस Fe3 प्लस तो नहीं, Fe2 प्लस, यहाँ पे आयन Fe3 प्लस है. तो देखो, तो ये डायग्राम पूरा ठीक से देख लो. ठीक है, इस डायग्राम में उन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि विच एलिमेंट इज फॉर्मिंग द एनोड इन अबोव डायग्राम. अब एनोड मतलब क्या, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन anode is that electrode where oxidation happen and cathode is that electrode where reduction is. Okay, so anode पे oxidation हो रहा है. कौन सा oxidation हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में पता है क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली करोजन में होता है, कोई भी मेटल का कोई भी स्पॉट हो, उस स्पॉट पे जो उस स्पॉट पे कुछ ठिक्का लग जाता है या कुछ भी होता है, बट उस स्पॉट पे जो मेटल होता है वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. समझ लो Fe जो है वो Fe प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो आयन है वो Fe से Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है. अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल, ये थ्रू द मेटल किसी और स्पॉट पे जाते हैं, और किसी और स्पॉट में जाने के बाद क्या होता है,
कि दे कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वो ऑक्सीजन को, नॉर्मल ऑक्सीजन जो अपना नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन इस चार्ज इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में जब आता है तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन टू फॉर्म ऑफ वाटर। अब ये H प्लस आयन कहां से आता है, अब ये H प्लस आयन आता है H2CO3 से। H2CO3 कहां से आता है, जब एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर, जब एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब H2CO3 बनता है। और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, तो वो क्या करता है, वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। तो इस तरह से ये पूरी करोजन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे जो Fe2 प्लस में कनेक्ट हुआ है वो Fe+2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से Fe2O3 बनता है, और वो Fe2O3 ही एक्चुअली क्या बोलते हो, वो Fe2O3 ही सिंबल है तुम्हारे करोजन का। जब ये आयन के साथ करोजन होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। तो उन्होंने पूछा है कि which element is forming the anode in the abode? So obviously it is the iron which is forming the anode in the abode diagram, है ना, आयन के ऊपर एनोड बन रहा है ना। Second, what will happen if you cover the surface of iron by magnesium metal? तो देखो, ये जो करोजन की प्रोसेस मैंने बोली, ये करोजन की प्रोसेस को अगर तुमको रोकना है तुम क्या करोगे, तुम आयन को किसी और मेटल से कवर करो। तो ये कवर करने वाली दो टेंडेंसी, मतलब दो टाइप के मेटल, एक जिंक होता है, जिंक एंड टिन, दूसरा होता है मैग्नीशियम। जिंक एंड टिन क्या करते हैं, व्हेन दे आर कवरिंग द आयन दे देमसेल्व्स गेट करोडेड। जिंक एंड आयन दे देमसेल्व्स गेट करोडेड एंड दे विल प्रोटेक्ट द आयन। ठीक है, तो उसको, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला शायद, रुको, जिंक, सॉरी, लेट मी कम अगेन। जिंक जो होता है जब आयन के ऊपर कवर करता है तो जिंक इनर्ट है, तो जिंक रिएक्ट नहीं करता। तो जिंक रिएक्ट नहीं करेगा तो कितना भी ऑक्सीजन वाटर कांटेक्ट में आ जाए जिंक के साथ कुछ नहीं होगा। तो अगर जिंक के साथ, ऊपर वाले जिंक के साथ कुछ नहीं होगा तो नीचे वाले आयन के साथ कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं पैसिविटी। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम। जब तुम मैग्नीशियम से थैंक यू मनोज, जब तुम मैग्नीशियम से आयन को कवर करोगे तो क्या होगा, एक तो हो गया प्रोटेक्शन जो जिंक ने किया, दूसरा क्या है, दूसरा है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। मैग्नीशियम जो है इट एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। सैक्रिफिशियल मतलब क्या, कि मैग्नीशियम जो है वो खुद करोड़ हो जाएगा लेकिन आयन को बचाएगा। ये रोमियो राना जैसा हो गया, लव स्टोरी जैसा। तो मैग्नीशियम खुद तो करोड़ हो जाएगा, खुद पूरा फट जाएगा लेकिन आयन को कुछ नहीं होने देगा। तो इसका मतलब जो भी करोजन का रिएक्शन हो रहा है वो मैग्नीशियम अपने ऊपर ले लेता है और ऑक्सीजन को वैसा का वैसा रखता है। उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। ओके, दैट इज व्हाट योर मैग्नीशियम डज। तो अगर तुम मैग्नीशियम से कवर करोगे तो ऑब्वियसली करोजन रुक जाएगा। ठीक है, अब थर्ड है, व्हाट विल हैपन टू द प्रोसेस ऑफ करोजन इफ देयर इज अ कंप्लीट, ओ सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन का इश्यू है लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। What will happen to the process of corrosion if there is a complete absence of H plus ion? मैं तुमको क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या क्वेश्चन, मतलब अगर तुम करोजन किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे H प्लस आयन तुम्हारे मेटल के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा है, मतलब H2CO3 बन ही नहीं रहा है। अगर H2CO3 बन ही नहीं रहा है तो H प्लस आयन आएगा ही नहीं। अगर H प्लस आयन आएगा ही नहीं तो ये जो रिएक्शन हो रही करोजन की वो होगी ही नहीं। तो बेसिकली अगर H प्लस आयन नहीं होगा तो करोजन भी नहीं होगा। ओके, चलो आई होप ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलो नाउ लेट्स गो टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है, जैसे मैंने बोला सेक्शन सी में एक स्टोरी रहने वाली है, जब पैसेज रहेगा वो पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो लेट्स रीड आउट द, अब मैं थोड़ी जगह करता हूं ताकि तुम लोग पढ़ सको। ठीक है, तो क्या है देखो, एंजाइम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। You know what, had it not been for enzymes the food that we eat would have taken days to get digested
तुम समझ रहे हो, अगर एंजाइम अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर एंजाइम्स नहीं होते तो जो तुम खा रहे हो ना वो पचाने के लिए तुमको कई दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम तुम्हारा खाना पचाने में तुमको हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा, they contribute in they contribute in numerous biochemical reactions which are vital for normal functioning of a human body. Okay, enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. They are actually protein molecules. They are actually protein molecules of high molecular mass and form colloidal solutions in water. They are very effective catalysts. So enzymes क्या है? Enzymes are catalysts. And they can catalyze numerous reactions, especially those connected with natural processes. बहुत सारे natural processes को तुम्हारा जो enzyme है वो process करता है, catalyze करता है, मतलब reaction fast होने के लिए help करता है. Okay? Now, so numerous reactions that occur in the bodies of animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by enzymes. The enzymes are thus termed as biochemical catalysts, and the phenomenon is known as biochemical catalysis. One molecule of an enzyme may transform 1 million molecules of reactant per minute. इसका मतलब एक अकेला एंजाइम 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक साथ रिएक्ट करवा सकता है। देखो कितना कितना मतलब बढ़िया कैटलिस्ट है तुम्हारा एंजाइम। एंड यू नो व्हाट, एंजाइम्स आर द बेस्ट कैटलिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सो ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक, रिमेंबर दिस, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन। one catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amine. Okay. The rate of an enzyme reaction becomes maximum at the definite temperature called the optimum temperature. Okay, उसके बाद on either side of the optimum temperature the enzyme activity decreases. ठीक है, और आगे क्या है, the optimum temperature range for enzymatic activity is 298 to 30 Kelvin. इसका मतलब 298 से 30 केल्विन में तुम्हारे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी रहती है, दैट्स ऑप्टिमम रेंज। उसके नीचे जाओगे और उसके ऊपर भी जाओगे तो एंजाइम की एफिशिएंसी कम ही हो जाएगी। ओके, सो द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज बीइंग 300 केल्विन। तुमको पता है हमको जब बुखार आता है तो हम क्यों मरते हैं? कभी कभी बुखार आता है और बॉडी में कुछ नहीं होता फिर भी लोग मर जाते हैं। तुमने कहीं सुना होगा बचपन से, क्यों? क्योंकि तुम्हारे एंजाइम की जो रिएक्शन है, देखो 310 केल्विन तक तुम्हारा एंजाइम चलता है, उसके बाद अगर तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम स्टार्ट गेटिंग डीनेचर्ड, क्योंकि वो प्रोटीन है। जब डीनेचर हो जाएंगे सब बॉडी के जो एंजाइम सब अगर एक साथ डीनेचर हो जाएंगे तो यू विल डाई। दैट इज व्हाई पर्सन एक्चुअली डाइज। एनीवे, सो द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन is suited for enzyme catalyzed reaction. The rate of an enzyme catalyzed reaction is maximum at a particular pH called optimum pH, which is between pH value 5 to 7. The enzymatic activity is increased. Enzymatic activity is increased in presence of certain substances known as coenzymes. It has been observed that when a small non-protein vitamin is present along with an enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. Activators, these are called as what? These are called as activators. And activators are what? They are generally metal ions such as Na plus, Mn2 plus, cobalt, copper 2 plus, etc. These metal ions when weakly bonded to an enzyme molecule
increases their catalytic activity. Amylase, मैं ना इसको ये करता हूँ, हाँ ये बढ़िया. Amylase in presence of sodium chloride, that is Na plus ions are catalyzed very active like ordinary catalyst. Enzymes are also inhibited. ये क्या है? VOR रेड. अच्छा ठीक है चलो. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, जैसे ऑर्डिनरी कैटलिस्ट होते हैं उसी तरह से तुम्हारा enzymes are also inhibited, poisoned by the presence of certain substances which are called as catalytic poisoning. Okay, so the inhibitors of poisons interact with the active functional group on the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzyme. The use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body. Okay, तो ये पूरा पैसेज है. अब हम इसके ऊपर से क्वेश्चन रीड करेंगे. क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो आई होप तुमने पूरा पढ़ लिया हो, तुमको पूरा समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एंजाइम्स? देखो सबसे पहला क्वेश्चन कितना इजी है. व्हाट आर एंजाइम्स? आर दे कार्बोहाइड्रेट्स? आर दे प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स? व्हाट इज इट मनोज? कैन यू टेल मी? मनोज क्रिएशन, बताओगे क्या है? पैर में तो बहुत कर रहे हो लेकिन आंसर तो बताओ भाई. चलो मैं बताता हूं. जैसे हमने देखा एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, राइट. दूसरा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. क्या है? गिवन एंजाइम कैन कैटलाइज मल्टीपल रिएक्शन. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमने देखा दैट enzymatic reactions are extremely specific. A given enzyme can catalyze given biochemical reaction only and no other. Okay, so that is false. Next, what is the role of activator and temperature in the activity of an enzyme? See, the activity of an enzyme is optimum. Activity of an enzyme is maximum in the optimum range of temperature. As far as optimum range of temperature for human body is concerned, it is 298 to 310 डिग्री केल्विन. मतलब इसी रेंज में अगर टेम्परेचर रहेगा तो ही तुम्हारे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी. इससे नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. तो वो रोल है तुम्हारे टेम्परेचर का. क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा एंजाइम, क्योंकि वो प्रोटीन है, इट विल बिकम डीनेचर. डीनेचर मतलब क्या? कि लूजिंग इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. ओके, और एक्टिवेटर क्या है? जैसे हमने देखा Na प्लस Mn2 प्लस, दीज आर द एक्टिवेटर. एक्टिवेटर क्या करते हैं? एक्टिवेटर इंक्रीजेस द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एन कैटलिस्ट. एंड द लास्ट, इन व्हाट एस्पेक्ट एंजाइम्स आर जस्ट लाइक नॉर्मल मेटालिक कैटलिस्ट? देखो पूरे सब एस्पेक्ट में तुम्हारा एंजाइम भी कैटलिस्ट है और कई सारे मेटल भी कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन सब एस्पेक्ट में दोनों सेम नहीं है. देखो जो मेटलिक कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते पूरी तरह से, मतलब कुछ होते भी है, लेकिन ज्यादातर यू कैन यूज अ सिंगल मेटलिक कैटलिस्ट फॉर मल्टीपल रिएक्शन विच इज नॉट पॉसिबल विद द एंजाइम्स. ओके, तो वो तो दोनों में डिफरेंस है. स्पेसिफिक हो गए. उसके बाद स्पीड एंजाइम कैटलिस्ट का जितना ज्यादा होता है उतना मेटालिक कैटलिस्ट का नहीं होता, तो ये भी डिफरेंस है. तो सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये कि पॉइजनिंग, कैटालिटिक पॉइजनिंग मेटालिक कैटलिस्ट का भी होता है और एंजाइमेटिक कैटलिस्ट का भी होता है. दोनों का पॉइजनिंग उतना ही खतरनाक होता है. दोनों का पॉइजनिंग से कैटालिटिक एक्टिविटी उतनी ही खत्म होती है जितनी दोनों जगह होती है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इस तरह से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए. आई होप दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. डू जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सेम टाइम. ओके, थैंक यू very much.